Good morning, students. Now let us discuss about the chapter 11 of Forests of India. Forests. Forests are jungle. Jungle, this word can be used in English also and in Hindi also. In pure Hindi, if we say forest mean one, okay, that you study in Hindi subject. And jungle is the word common in English and Hindi both. Fine. So now let us discuss the forests of India. Why are we going to discuss this chapter? First we have to understand. Why? So now the question is, why do we have to study this chapter? What comes to your mind when you think of forests? Okay? When you think about the forest, what comes in your mind? Lots of trees? Lots of trees, trees and only trees. Green, lush green jungle. That whenever we think about forest, हमें हमारे आंखों के सामने क्या आएगा? जंगल आएगा और बहुत सारे पेड़ and green, completely green structure हमारे आंखों के सामने आएगा. Okay? Do you think forests are useful to us? है useful? क्या forest से हमें क्या फायदा है? ये किस तरह से हमें हमारे useful है? ठीक है? तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. Think of different ways in which they are useful. ये आपको सोचना है. Now I am teaching this chapter, but you have to think how the jungle, how the forest is useful to us in a different ways. Now things to learn in this chapter: the importance of forest. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? What are the things that we are going to learn in this chapter? The importance of forests. Okay, importance of forest. Forest का importance क्या है? The type of forests and where they occur in India. What type of forests are there? Now different types of forests are there as per the climate. The forest which is in Rajasthan and the forest which is in Uttarakhand, both are different because of the climate. Uttarakhand is the cold place and forest of Madhya Pradesh is again different. Okay, forest of Gujarat is again different. Forest of Karnataka is different. So that's why we have to learn different types of forests and where they occur in India. कहाँ कहाँ इंडिया में है? The conservation of forest and wildlife. Conservation means संरक्षण करना, बचाना किसी भी चीज को. And wildlife. Wildlife, you know, the animals which live in forest. They are called wildlife. So, how to conserve this forest and the wildlife? कैसे हम बचा सकते हैं इनको? Now the forest I have given a one image of forest. Green, there the light is scattering, sunlight is scattering from here, and lush green jungle. You can see number of trees are there, number of small plants are there, herbs, shrubs, everything is available. Herb means very very small plants. Shrubs are a little bit higher plant, okay, and the trees are there in the jungle. Now forest, large area. What is forest? Large area of land covered mainly with trees and other small plants. Okay, these are not planted by human. हम नहीं जाके लगाते हैं, but they grow naturally. अपने आप पेड़ उग जाते हैं, अपने आप ये जंगल बनता है. They grow naturally and they grow in nature by their own. They are called natural vegetation. इसको हम क्या कहेंगे? Natural vegetation. जहाँ हम लगाते हैं वो हमारा ग्रो किया हुआ रहता है और ये जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, they are natural. So they are called natural vegetation. The kind of trees or other plants that grow in a forest depend on the climate and soil of the place. मैंने बोला, पहले भी बोला, the climate and the soil of the place. अब राजस्थान में ग्रो करने वाला पेड़, it cannot grow in Uttarakhand. It cannot grow in Himachal. And the trees which grow, the plants which grow in Uttarakhand, in Himachal, cannot grow in Rajasthan. So, why? Because of the different climate and the different soil. पढ़ाया था मैंने soil chapter में. Yes, you have to remember the soil chapter also. Soil chapter में पढ़ाया था sandy soil, loamy soil, clay soil, है ना? So different types of soils are there. So sandy soil, climate, soil chapter of soil of Rajasthan is sandy soil. Okay, so the here it cannot retain water. पानी ज़्यादा नहीं रख सकता, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ के soil में only the desert and the babul
खेजड़ी इसको बोलते हैं, खेजड़ी, ये सब यहाँ पे ग्रो करते हैं, राइट. And but in North India, there the climate is very humid, water is there, so the plants are different. Okay. Now, importance of forest. हमारे life में forest का क्या importance है? Now, forest can be useful to us in many ways as it is a natural resource. Natural resource मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. रिसोर्स हमारी लाइफ के लिए. तो योर फॉरेस्ट इज नेचुरल रिसोर्स. आर्टिफिशियल रिसोर्स होता है जो हम बनाते हैं अपने लिए, और नेचुरल रिसोर्स क्या है जो नेचर हमें देता है. ओके. एंड टिम्बर इज द वुड को हम जब फर्नीचर के रूप में कहीं पे यूज करते हैं तो वो वुड जो है टिम्बर के नाम से जाना जाता है. द वुड विच कैन बी यूज फॉर द बिल्डिंग द हाउसेज एंड फर्नीचर, दे आर कॉल्ड टिम्बर. फायरवुड, यस, फायरवुड चूल्हे जलाने के काम आता था. अभी भी गांव में लोग लकड़ियां यूज करते हैं एज ए फ्यूल. वुड पल्प मीन्स पेड़ के अंदर, पेड़ को जब काटते हैं तो अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड पल्प. यूज्ड टू मेक पेपर. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, यूज्ड टू मेक पेपर. नाउ सो यू हैव टू यूज द पेपर वेरी जुडिशियसली. बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं. ओके. एंड विच इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वुड पल्प. Because paper is being used by wood pulp, we have to use the paper very judiciously. बहुत ध्यान से हमें यूज करना चाहिए. Rubber, we get rubber from forest, we get gum from forest, we get cork from forest, we get resins from. Now this resin is used to make the paint. घर को पेंट करने के लिए जो पेंट बनता है ना, वो इस resin, and this resin we get from the forest. Okay. And we get medicines also, like medicinal plants are there. Neem जो हमारे आसपास बहुत है, it is a medicinal plant. So Ayurvedic medicines and naturopathic medicine, naturopathy ये सब जो होते हैं उसमें नेचर से ही प्लांट, नेचुरल मेडिसिनल प्लांट से ही मेडिसिन उसमें मिलता है. ओके. Now and forest also what is do? It does prevent soil erosion. मैंने सॉइल चैप्टर में इसको नहीं पढ़ाया था. इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच. दैट्स व्हाई आई लीव दैट पोर्शन इन सॉइल चैप्टर ऑफ साइंस. साइंस के सॉइल चैप्टर में ये पोर्शन मैंने नहीं पढ़ाया था. व्हाई? बिकॉज आई एम गोइंग, बिकॉज इट वाज सपोज्ड टू बी टीच इन सोशल साइंस. सो प्रिवेंट सॉइल एरोजन. नाउ दिस सॉइल एरोजन इज अ वर्ड. यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉप लेयर ऑफ सॉइल. टॉप लेयर जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, मैंने सॉइल में पढ़ाया था, ह्यूमस होता है ऊपर वाले लेयर में. एंड ह्यूमस इज वेरी वेरी फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल. बहुत ही फर्टाइल होता है. तो वो ह्यूमस वाला जो सॉइल होता है, वो अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो सॉइल बारिश में बह जाएगा. ओके. सो द रूट्स ऑफ द ट्रीज दे होल्ड द सॉइल एंड दे प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम एरोजन. कंट्रोल्स फ्लड. फ्लड को भी कंट्रोल करता है. बाढ़ आती है तो पेड़ जो होते हैं ना, वो पानी को रोकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड रोकता भी है एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द इट कंट्रोल्स द नेचर, इट कंट्रोल्स द क्लाइमेट. तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लड भी कम आता है. सप्लाई ऑक्सीजन टू द एयर, चैप्टर 1 साइंस के चैप्टर 1 में पढ़ाया था. फोटोसिंथेसिस. सो ड्यू टू द प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्री सप्लाई ऑक्सीजन टू द एयर. इंक्रीज रेनफॉल बाय कीपिंग एयर कूल. ठीक है, ये एडेप्टेशन में थोड़ा सा है. एंड रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर. हाँ, इसको आप अगर चेक करना है, इफ यू वांट टू चेक दिस लाइन, इंक्रीज रेनफॉल बाय कीपिंग एयर कूल एंड रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर, यू कैन डू वन थिंग. इफ यू हैव प्लांट एट योर होम, कोई भी प्लांट अगर है तो उसमें आप क्या करो, रात को एक लीफ में पॉलिथीन बांध दो. ओके. यू जस्ट टाई वन पॉलिथीन in one leaf of the plant. Next morning you can see the water droplets inside the polythene. Polythene में water drops दिखेंगे. It means it is a natural process of plant to release water vapor in the air. ये क्या करते हैं, जो excess water होता है ना, उसको release करते हैं leaf के through, and that process is called transpiration. जो higher classes में जाके पढ़ोगे, transpiration, but still I am explaining here. So how the plant release water vapor? By the process of transpiration. So releasing water vapor in the air, and by increasing rainfall, by keeping increasing rainfall by keeping air cool.
So very important things are there. How these trees contribute to the nature. Leaf litter for manure preparation. Yes, पत्ती का खाद होता है, because in our colony, that is, you know that I am from JK Tires colony. I reside there, and there are thousands of trees are there. So every year in the autumn season they collect the leaf and then they make the manure. उससे manure बनाते हैं, पत्ती का खाद बोलते हैं. Okay, and shelter for wild animals. Shelter for wild animals. Obviously, जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? जंगल में ही तो रहेंगे ना. तो इट इज अ शेल्टर. शेल्टर मतलब रहने की जगह. हमारा शेल्टर क्या है? हमारा घर है. तो वाइल्ड एनिमल्स का शेल्टर क्या है? जंगल है. आजकल हम लोग जंगल काटते जाते हैं, इसलिए ऑल द पैंथर्स, तेंदुआ तुमको सड़कों पे घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका जंगल तो हमने काट दिया है. हम अपना घर बना के रहने लगे हैं जंगल में. जंगल को काटते जा रहे हैं तो बेचारे कहाँ रहेंगे? तो वो जब वो शहर में घूमना शुरू कर देते हैं. ओके, टुडे ऑल्सो देयर वाज न्यूज. ओके, सो नाउ यू कैन सी timber, firewood, wool pulp, rubber, gum, cork, resin used to make the pens, medicine. ये सब क्या है? हमारी यूज का है. But now you can see how the forests contribute to the nature. Prevent soil erosion, control floods, supply oxygen to the air, increase rainfall by keeping air cool, releasing water vapor in the air, leaf litter for manure preparations, shelter for wild animals. तो ये सारी चीजें क्या है? ये नेचर को देता है. तो now you can see that forest is very important for us, very important for us and for the nature also. Okay, now types of forests. There are five main types of forests as per the soil, as per the climate. Okay, according to the climate and the type of soil, there are five main types of forests: evergreen forests, deciduous forests, thorn forests, mountain or coniferous forests, marshy and tidal forests. Okay, so for this I told you to go through the second chapter of science. So 3 chapters are science is there: chapter 1, chapter 2 and the soil chapter. I forgot the number. I think maybe chapter 9 or 11. I don't remember. So these 3 chapters that you studied in science will help you to understand this chapter a little bit. So check that chapter also. So again I am repeating, there are 5 main types of forests: evergreen forest, deciduous forest, thorn forest, mountain or coniferous forest, marshy and tidal forest. Okay. Thank you.